Assalamu alaikum, dear all. This is the last and fourth session of the multiple choice question. अगर हम ऑब्जेक्टिव पे चले जाएं तो प्रीवियस 3 सेशन में हमने डिस्कस किए थे अबाउट द टाइप्स ऑफ एमसीक्यू as well as we discussed the Miller parameter, the Miller prism. Then we discussed the inarity of the MCQ, both the A type and R type MCQ inarity हमने डिस्कस की थी. Then we discussed the pathologies, the CU and the CIV दोनों pathologies हमने डिस्कस की थी. और उसके बाद जो तीसरा सेशन था that was all about the management of the construct under representation in which we discussed in detail about the blueprinting of the MCQs test. ये एक किसी भी टेस्ट के लिए ब्लूप्रिंट क्या चीज़ है और इसके बाकी जो कंपोनेंट्स है वो क्या क्या है और किस तरह हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं. इस सेशन में हम बाकी दो ऑब्जेक्टिव्स जो है उस पर डिस्कस करेंगे. We will discuss how to manage the technical class का मोटो MCQ. तो उसके लिए हम सबसे पहले जो है MCQ की जो कॉमन क्लास है उसके एग्जांपल देंगे और फिर उसको उस क्लास उस मिस्टेक को उस क्लास को हम उसमें आइडेंटिफाई करेंगे और फिर देखेंगे कि इसको किस तरह हम करेक्ट कर सकते हैं. So let's go towards the technical class related to both categories of the pathology. So that was the end of the third session. यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपना जो ये लास्ट सेशन है. हम यहाँ पे जो कॉमनली फ्लाज है जो एमसीक्यूज में अक्सर गलतियां हमसे होती हैं while constructing the MCQs. So वो गलतियां जो हैं जो पैथोलॉजीज की दो कॉमन कैटेगरीज हैं टेस्ट वाइसनेस या इररिलेवेंट डिफिकल्टी उससे रिलेटेड होती हैं. तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि टेस्ट वाइसनेस से रिलेटेड हमसे कौन सी कॉमन फ्लाज होती हैं और उसके बाद जो है इररिलेवेंट डिफिकल्टी के रिलेटेड कौन कौन सी हमसे गलतियां होती हैं. तो हम एक एक को हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू द टेस्ट वाइसनेस. सबसे पहले जो अक्सर गलती हमसे होती है कि हम एक ग्रामेटिकली क्लू दे देते हैं, यानी ऐसे कोई ग्रामेटिकली हम मिस्टेक कर लेते हैं जो टेस्ट वाइसनेस से मुराद ये है कि अगर थोड़ा सा भी स्टूडेंट जो है वाइस हो, थोड़ा सा भी और अकल यूज करे तो वहां से एक एमसीक्यू में से उसको आंसर जो है मिल सकता है, इसको एक क्लू मिल सकती है. और वो क्लूज में से पहला जो है दैट इज नोन एज द ग्रामेटिकल क्लू. अब यहाँ से अगर हम देखें पहले एग्जांपल में easiest way to get an update on medical information is books, medical journal, guidelines, the internet and newspapers. यहाँ से अगर आप देखिए all of them they are in plural except this one, the internet. So nowadays the easiest way to get an update medical journal information is the internet. This is the best option. बाकी सब plural में except this one which is not in the plural. So the next technical mistake, yeah, we can say that the technical flaw when during the construction of MCQ is the logical. अब यहाँ पे लॉजिकल की से मुराद ये है कि when यहाँ पे कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं जो काफी मुख्तलिफ होते हैं दूसरे से. तो जो टेस्ट वाइज स्टूडेंट्स होते हैं ये उनको पता होता है कि आंसर जो है इन्हीं से रिलेटेड होते हैं क्योंकि बाकी दो जो से बहुत मुख्तलिफ है और ये 3-4 ऑप्शन जो हैं ये बिल्कुल एक जैसे हैं या एक या दो बाकी से बिल्कुल मुख्तलिफ कैटेगरी के हैं. सो दैट्स वाई वो इसको बिल्कुल इग्नोर ही करेगा. तो ये जो लॉजिकल उसमें आ जाती हैं कि लॉजिकल ये इसके साथ आता ही नहीं. But this technical this most commonly occurs when one of the option contains all the other options, and test-wise students will select amongst the similar option, not the outlier option.
We often have writing difficulty when trying to generate the last option, and often that the last option is unrelated to the other option. For example, we have an MCQ here. A 20-year-old adolescent attended the emergency complaint department, complaining of the abdominal pain, fatigue, polyuria, polydipsia, and vomiting. On examination, the patient was drowsy and dry. Which of the following changes you expect to see in the blood test? Hypoglycemia, hyperglycemia, normal glucose level, hypocalcemia, and metabolic alkalosis. Now here in this item, option A, B, and C include all logical possibilities in any patient, which mean a human being has either increased blood sugar, a normal blood sugar, or decreased blood sugar. The test-wise student know that the correct answer must be A, B, or C, whereas the non-test-wise student spends time considering the correct option as the D and C. The next is the use of the absolute term. Terms such as always and never, they sometimes we are used in the options. Many higher level ideas, they are not absolute. Never true or never are always true, they are often too absolute. And students are experts arguing the outlier idea that is outside such absolute. Avoid absolute words and substitute words that require more judgment, which is the best, which is the most likely, the most appropriate, the most possible. All these words that can be substituted for that absolute words. और मेडिकल में अगर हम देखें तो देयर इज नो एब्सोल्यूट कोई भी कंडीशन इस तरह कि हमेशा इसी तरह होगा, देयर में भी वेरिएशन उसमें आते जाते हैं. So that's why जिस तरह हम एक्सक्यूज में ऐड करते हैं, what is the most appropriate diagnosis, what is the most possible diagnosis. In this example, just we have to read in deep venous thrombosis, in DVT patient, in DVT of the lower extremity, which of the following statement is most appropriate? Options are 70% of patients will have physical finding on examination. The gold standard test for the diagnosis of DVT is the radiofibrinogen leg scanning. Indicaguline is the treatment of choice for the distal lower extremity DVT. Pulmonary embolism always come from the lower extremity DVT. Test-wise, students usually do not select items with the words always or never, like in item D. Pulmonary emboli always comes from the lower extremity because that emboli may be from anywhere. So that's why test-wise students, they will directly ignore this option that is impossible to be the correct option. And instead, they will tend to choose the item with the words usually are frequently, knowing that nothing is absolute in medicine. The next technical flaw is related to test writings is the long correct answer. Correct answer is longer, more specific, or more complete than other option. और अक्सर हम इस तरह करते हैं कि कोई भी डेफिनेशन वगैरह होती हैं तो उसकी जो करेक्ट आंसर हम वहाँ पे तो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं या लिखते हैं, और बाकी जब डिस्ट्रैक्टर्स जब हम लिखते हैं तो इतनी ज़्यादा डिटेल से हम नहीं लिखते. तो ये भी एक होती है कि जो टू लॉन्ग होता है वो अक्सर जो है द करेक्ट ऑप्शन होता है. सो टेस्ट वाइज जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अगर उनको आता भी नहीं है तो जो टू लॉन्ग वाला ऑप्शन है वो यूजुअली क्या करते हैं, उसको करेक्ट उसको टिक दे देते हैं कि दिस वन इज द करेक्ट. तो हम इसको किस तरह कर सकते हैं कि अगर टू लॉन्ग है तो द लेंथ ऑफ द ऑप्शन दैट शुड बी सिमिलर, और सिमिलर अगर इतनी भी है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन not like that one option is 3 line, the other options are one line. So when we often feel we should include more detail in the correct answer to ensure that that is clearly the best choice.
दिस इज कॉल्ड टू लॉन्ग टू बी रॉन्ग रूल। और यही वजह होता है कि अक्सर स्टूडेंट जो है इसी को भी टिक कर देते हैं। Unfortunately, tips why students can use this to their advantage. So, what is the solution to this? Keep the options similar in length and level up detail. Like in this example, the parent of a 2-year-old boy reported that he shows entering when walking. On examination, the child exhibit femoral introversion. The most appropriate treatment is, अब उसकी इंट्रोवर्जन है हिप जॉइंट में, तो उस इंट्रोवर्जन की ट्रीटमेंट क्या होगी? Reassuring to the parent that the condition usually corrects itself as the child grows older, refer to an orthopedist, refer to a physical therapist, bracing to correct internal rotation of the femur. In this item, option A is longer than the other three options, and this is the correct one as well. So item writers tend to pay more attention to the correct answer than to the distractor because we are the teachers and we usually write the long correct answers which include additional instructional material. So that's why we should avoid too much long option in the option, and we should keep the length of the options uniform and similar. If this is two lines, so the other three options should also have answer in two lines. If this is a single line, so there should all the other options should be single line. There may be some room for the flexibility, like here in this C and D, refer to the physical therapist bracing to create internal rotation of the foot. These are not similar, but still they are not too long. That is long, but not too long. So here we had too long to be wrong rule. Like here, there are two long sentences as compared to these three. We should avoid such class. We should keep the length and detail of the options similar and uniform in length. Word repeat. A word or phrase is included in the stem and in the correct answer. Students look for words or phrases that are repeated in the question and option. The more repeating, the more likely is the right answer. ये अक्सर उन सीनियरों में होता है कि जब हमारी ऑप्शंस में दो तीन किस्म के कंसेप्ट होते हैं या दो तीन तरह के एस्पेक्ट्स हम आते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर हम उसकी रिलेशनशिप देखते हैं कि द थ्री सरफेसेस आर, किसी भी गुण के बारे में एक कंटेक्स्ट फ्री एमसीक्यू दे देते हैं कि सपोज ए बी सी एक बोन है जिसकी थ्री सरफेसेस होते हैं। द थ्री सरफेसेस आर इंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लेटरल, इंटीरियर, पोस्टीरियर एंड मीडियल, इंटीरियर, मीडियल एंड लेटरल। अब यहाँ पर अगर आप देखिए इंटीरियर सब में काम आना है, तो उसको पता होता है कि इंटीरियर इज द रिपीटेड वर्ड, ये सब में आ रही है। यहाँ पर फिर आप देखिए पोस्टीरियर जो है ये दो में काम आने, एक में नहीं है, तो फिर भी जो है उनको पता है कि नाउ द करेक्ट आंसर दैट इट इज बिटवीन इंटीरियर पोस्टीरियर मस्ट है, एक जो है या तो मीडियल है या लेटरल। लाइक इन दिस एग्जांपल, या इस तरह एक और भी हो सकता है कि जब हम अगर इस तरह की एक आंसर्स में उनकी जो आइटम की जो सिनेरियो है या यूनिट है उसमें हम इस तरह की ऑप्शन दे देते हैं कि जो नीचे एक वर्ड दे देते हैं जो नीचे ऑप्शन में रिपीट होती हैं, तो उससे भी स्टूडेंट्स को अंदाजा होता है कि नाउ द टेस्ट वर्ड आर रिपीटिंग। जस्ट लाइक हियर इन दिस एग्जांपल, a 58-year-old man with a history of heavy alcohol use and previous psychiatric hospitalization is confused and agitated. He speaks of experiencing the world as unreal. This symptom is called depersonalization, derailment, derealization, focal memory deficit, signal anxiety. अब यहाँ पर अगर हम देखें अनरियल वर्ल्ड जो है दिस इज सिमिलर टू डीरियलाइजेशन, तो ये दोनों जो है यहाँ पे एक को एक सिग्नल दे रहा है कि द वर्ल्ड इज अनरियल। अनरियल या डीरियलाइजेशन मीन कि जो विच इज अदर देन द रियल, विच इज अपोजिट रियल। तो डीरियलाइजेशन या अनरियलाइजेशन जो है दिस बोथ आर सिनोनिम ऑफ ईच अदर इन सम एस्पेक्ट। तो इस तरह की जो है वर्ड रिपीट दैट शुड बी अवॉइडेड।
अदरवाइज टेस्ट वाइज स्टूडेंट जो है उनको पता होगा कि नाउ नाउ इनको इस सीनियरियो का उनको नहीं पता, लेकिन उनको ये सिर्फ यहाँ से ये अंदाजा लगेंगे कि यहाँ इट इज अनरियल, so the derealization is the correct answer. So we should revise it, repeat word related class. The next is the conversion strategy. The correct answer include the most element in common with the other option. Like we discussed in the previous one, this is exactly similar to the one which is the repeated word, कि जिसमें एक वर्ड बार बार रिपीट होता है, तो उसको जो है या वो एग्जांपल हम यहाँ भी दे सकते हैं कि जो अभी हमने कहा कि एक ABC बोन है और उसकी सपोज 3 सरफेसेस है, ये तो बताया जाता है these 3 surfaces are interior, posterior, medial, interior, posterior, lateral, interior, medial, lateral. अगेन यहाँ पे अगर हम देखें इंटीरियर वर्ड जो है ये तीनों में है, पोस्टीरियर वर्ड जो है ये यहाँ पे में तरतीब से आ रही हैं, दोनों में आ रही हैं, जबकि मीडियल लेटरल जो है पहले वन में मीडियल है, दूसरे में लेटरल है, फिर तीसरे में मीडियल लेटरल है, तो वो दोनों जो है इस तरह की तरतीब से नहीं आ रहे हैं, तो इसको भी जो है एक अक्सर जो उनको आ जाता है कि इंटीरियर वाला जो है ये मस्ट है, पोस्टीरियर वाला जो है ये मस्ट है, बिकॉज उनके एक लॉजिकली इस तरह बन जाते हैं, कन्वर्जन उनकी हो जाती है. So usually students will select the answer that combines the most element of all the options. The correct answer most likely is the one that combines the most number of common elements from the other distractors. If a word occurs in most of the options, most likely the correct answer will contain that word. If a term appears only in one option, then that probably is not the correct option. Like in this example, the correct answer includes the most element in common with the other option, that is the conversion strategy. An example of this is this MCQ, that oral polio vaccine induces specific active artificial congenital immunity, active artificial acquired immunity, passive artificial acquired immunity, active natural acquired immunity, passive natural acquired immunity. अब यहाँ पर अगर हम देखें ये 5 ऑप्शन, इन 5 ऑप्शन में से एक्टिव जो है ये 3 दफा है, इट मीन the passive is the wrong and test-wise students will select that active is the correct option. फिर अगर हम देखें artificial 3 दफाया है as compared to the natural, so again this is the correct option maybe because this is the most, ये 3 दफाया है. फिर acquired देखें, acquired सब में है, बाकी 4 में acquired. तो now अब ये किसी को पता भी नहीं है तो क्या कहेगा कि active artificial acquired immunity is the correct option. विकास अगर आप देखिए इन चारों में एक्वायर्ड आ रही है, तो कंजेनिटल वाला तो निकल गया यहाँ से. फिर हमने कहा कि आर्टिफिशियल इनेक्टिव दे आर रिपीटेडली यूज्ड 3 टाइम्स एज कंपेयर टू द नेचुरल एंड पैसिव, सो द ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. तो इस तरह की जो मिस्टेक जो है वो भी हम हमारे से नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज टेस्ट वाइज स्टूडेंट जो है ये उसको सेलेक्ट करेंगे. तो यहाँ से इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे the common flaws in MCQs which are related to the irrelevant difficult. Options are long, complicated or double. अब यहाँ पे इस तरह की जो है कि जो टेस्ट वाइज नहीं बल्कि इसमें कुछ ऐसी डिफेक्ट होती हैं, कुछ इस तरह की एक मिस्टेक होती हैं जो इसको हल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, या उसको में एक मतलब हम एक एक जो है अभी डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे एक MCQ है जिसमें peer review committees in the HMOs may move to take action against the physician credentialed to care for the participants of the HMO. Here is an institutional requirement to ensure that the physician receives the process in the course of these activities. Due process must include which of the following. अगर आप नीचे इन ऑप्शन को देखें तो इनको बंदा जो है स्टूडेंट रीड दिस या फिर जस्ट पहले ही लुक में उनको कि भाई दिस इज टू डिफिकल्ट. क्या अगर आप देखिए उसमें नोटिस एन इम्पार्शियल फोरम काउंसिल a chance to hear and confront evidence against him her, ये अक्सर उन सीनियरों में होता है कि जब हम MCQs बनाते हैं किसी स्लाइड वगैरह से और वहां से
एक सीनियरो बना लेते हैं, और सीनियरो के बाद जो नीचे ऑप्शन होते हैं ये हम स्लाइड से कॉपी पेस्ट करते हैं। तो स्लाइड पे या किसी टेक्स्ट बुक से वहां पे तो कंप्लीट सेंटेंसेस लेके होते हैं, डिटेल लेके होते हैं। तो इंस्टेड ऑफ जस्ट सेलेक्टिंग स्पेसिफिक डिटेल फ्रॉम दैट, हम पूरी की पूरी सेंटेंस जो है वहां पर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। उससे फिर प्रॉब्लम क्या होती है कि एक तो उनकी एक टाइम जो है होता है, तब सपोज 1 मिनट। अब 1 मिनट तो सिर्फ इसमें जब ये यहाँ से शुरू करेगा यहाँ तक, तो मैट भी जो है इसमें 1 मिनट इसको लग जाएगा, तो उसके लिए फिर डिसीजन करने में टाइम उसके चाहिए होगा। तो इसलिए हम जब एमसीक्यूज देखते हैं तो उसके ऑप्शन हमारे न ज्यादा लेंथी होनी चाहिए, न इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड होनी चाहिए, तो न जो है यहाँ पे डबल होनी चाहिए। और इसमें वो स्टूडेंट्स कामयाब हो सकते हैं या उसको कर सकते हैं आसानी के साथ इस तरह के एमसीक्यू, जिनकी स्पीडिंग स्पीड जो है ये ज्यादा है। तो इसमें अक्सर इस तरह लगता है कि हम जो है नॉलेज को चेक नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम जो स्पीड ऑफ रीडिंग है वो असिस्ट कर रहे हैं। Here is another example in the next slide. Here it is. It is related to some research like एक क्वेश्चन है कि जिसमें से एक a team of healthcare planners wishes to estimate the prevalence and incidence of AIDS in a particular community. Which of the following is the most appropriate? अब वो जो है, जो टीम हेल्थ केयर टीम है, ये स्टडी करना चाहते हैं कि प्रेवेलेंस फाइंड आउट करें, तो उनके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट जो उसका प्रोसीजर है, उसका डिजाइन है, वो कौन सा है। तो ये 5 ऑप्शन है। पहले इसमें अगर आप ओवरऑल हम देखें तो इन पांचों के पांचों ऑप्शन जो हैं ये इतनी लेंथी हैं कि अगेन वही बात कि हम स्टूडेंट्स की रीडिंग स्पीड असेस करते हैं, उनके नॉलेज असेस नहीं करते, तो ऑब्वियसली सच सीनियरिटी शुड बी अवॉइडेड। इतने लंबे लंबे जो हैं हमने, बल्कि इसके साथ साथ हम सिंपल इस तरह देते रहते हैं कि सपोज इसमें अगर देखिए perspective cohort design is the most suitable for estimating prevalence of AIDS. Simple, we should write the cohort study design. Next is the cross-section study design is the most suitable for estimating incidence of AIDS, and study group should represent not less than. So again, we have just to write the cross-section study design. तो इससे होगा क्या कि एक तो स्टूडेंट्स को डायरेक्टली पता चलता है कि भाई ऑप्शन में क्या मांग रहा है और ऑप्शन में क्या क्या है। लेकिन अगर इस तरह की सेंटेंस पूरी थी तो ये थोड़ी सी बहुत ज्यादा लेंथी हो जाए। सिमिलरली यहाँ पे एक दूसरी जो इस फ्लॉ के अलावा, इस गलती के अलावा एक दूसरी टेक्निकल मसला है, वो ये है कि यहाँ पर डबल मीनिंग भी आ रही है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे कहें क्रॉसिंग स्टडी इज द मोस्ट सुटेबल एस्टिमेटिंग इंसिडेंस ऑफ एड, ये एक फैक्ट होगी। लेकिन दूसरी में देखिए स्टडी ग्रुप शुड रिप्रेजेंट नॉट लेस देन 30% ऑफ कम्युनिटी अंडर स्टडी, ये एक दूसरा फैक्ट। यानी एक ऑप्शन में जो है यहाँ पे दो फैक्ट जो है पूछे गए हैं, एंड the second fact is not relevant to this item, which again it is a technical flaw. तीसरी जो इसमें एक बहुत बड़ी आ रही है टेक्निकल फ्लॉ, वो ये है कि आप इन दोनों ऑप्शंस को देखिए, सो ये थोड़ा सा लॉजिकल इस सीनियर को, इस क्वेश्चन को फॉलो करते हैं। लेकिन नीचे जो 3 ऑप्शन है दे आर नॉट रिलेटेड टू द सीरियल डिजाइन। इंसिडेंस के बारे में है, इंफॉर्मेशन ऑफ इंसिडेंस के बारे में, डिफरेंट इंसिडेंस के बारे में। तो these 3 options they are just epidemiology related question है, यानी इंसिडेंस के बारे में। उसमें स्टडी डिजाइन या रिसर्च के बारे में कोई नहीं। ये भी है कि ये दोनों जो है लॉजिकली उसके साथ फॉलो करते थे कि बाकी 3 इतनी ज्यादा डिटेल के बावजूद जो है उनमें से वो ऑप्शन या जो जो मकसद की जो पूछा गया क्वेश्चन उसके आंसर मौजूद नहीं है। तो ये भी एक अक्सर इस तरह हो जाता है। तो ये एक एमसीक्यू में ये 3 किस्म के फ्लॉज जो है ये आ रहे हैं। तो वी शुड अवॉइड ऑल दीज फ्लॉज। अच्छा, यहाँ पे दूसरा जो टेक्निकल फ्लॉ आ सकती है वो ये है कि यहाँ पे जो ऑप्शन होते हैं दे आर इर्रेगुलर ऑर्डर के साथ होते हैं। तो इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू कंसिस्टेंट इन द यूज ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर। हम अल्फाबेटिकल यूज करें तो ज्यादा बेहतर है। Whenever options are in spectrum, it is preferable to list them in either a logical order or alphabetically.
Suppose numerical option is, so there should be ascending or descending order. Logical order is more convenient for the students and eliminates the human bias. यानी मिसाल के तौर पर अगर हम 5, 10, 12, 13 ये आंसर्स दे रहे हैं, तो अगर हम इस तरह दे रहे हैं कि 12, 13, 10, 5, तो ये थोड़ा सा वैसे 12, 13 पर क्या अगर हम या 13, 12, 10, 5 या 5, 10, 12, 13 इस तरह की तरतीब इसकी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर आप देखिए ऑप्शंस आर इन द रेगुलर ऑर्डर वाले एग्जांपल के साथ, एन आर्टरीज आर सीन इन द adrenals, testicles, thyroid gland, thymus and brain। अब इस एटम में, इस एग्जांपल में आप देखें तो स्ट्रक्चर जो है, जो ग्लैंड्स हैं, या तो ये सुपीरियर टू इंफीरियर होनी चाहिए या जो है ये नीचे से ऊपर की तरफ होनी चाहिए। तो यहाँ से अगेन देयर इज नो सच ऑर्डर, सो अगेन it should be order के ब्रेन जो है there should be in the top, and then the testicles which are the lowest gland, so they should be in the bottom, या जो है there should be on the top, और फिर जो है बाकी लेस उसी से कि भाई towards the superior which is पूरी suppose brain structure is on the top, so that should be there। The next is, अब ये इम्पोर्टेंट है, अक्सर हम हमारे से कि भाई यहाँ जो ऑप्शन जो होते हैं ये हेट्रोजीनियस होती हैं, दे आर नॉट पैरेलल। मिसाल हम उससे के मोस्ट पॉसिबल डायग्नोसिस की क्वेश्चन करते हैं, और नीचे जो है डायग्नोसिस की बजाय कुछ सिम्टम्स होते हैं, कुछ टेस्ट वगैरह स्पेशल टेस्ट होते हैं, इन्वेस्टिगेटेड रिपोर्ट होती है। तो अगेन इस तरह की जो है हेट्रोजीनिसिटी जो है ये शुड बी अवॉइडेड, ऑल ऑप्शन दैट शुड बी होमोजेनस। और ये बहुत कॉमनली होता है व्हेन वी आर कंडक्टिंग, देखिए इसमें से जो एक दो जो है एक कैटेगरी के होते हैं, बाकी तीन जो है किसी और कैटेगरी से इनका ताल्लुक होता है। तो ये गलती अक्सर जो है हम टीचर से होती रहती है। जैसे मिसाल के तौर पर इन दिस एग्जांपल, a 75-year-old woman complains severe neck and shoulder pain. You suspect polymyalgia. Which of the following is the most appropriate? Shoulder muscle tenderness is not related to the condition. Loss of weight and fever would be expected. Her urine is likely to contain dense Jones protein. Muscle biopsy is positive if the diagnosis is correct. Steroid produce a very prompt symptomatic response but must be continued for up to 3 months in this condition। अब वहां पे पूरी मलेरिया के बाद उनसे नेक्स्ट मोस्ट एप्रोप्रिएट के बारे में क्वेश्चन किया गया है, लेकिन अगर हम इसमें देखें रिस्पांस जो है इस ऑप्शन में ये दे आर नॉट पैरेलल। इस तरह अगर हम देखें यहाँ पे ऑप्शन ए एंड बी जो है दे आर अबाउट द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ दिस कंडीशन, while the option C they are more relevant to the laboratory diagnosis or investigation। एंड उसके बाद जो है अगर हम उस पर जाए ऑप्शन ई जो है, बल्कि ऑप्शन डी जो है ये भी उसके साथ है, इन्वेस्टिगेशन या लेबोरेटरी के साथ इनका ताल्लुक है। डी ई जो है इट इज देन रिलेटेड टू द सम ट्रीटमेंट। तो अब यहाँ पे देखिए ये मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, ये इन्वेस्टिगेशन का क्वेश्चन है, और ये जो है इन कंडीशन की जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स या सिम्टम है, तो सिम्टम्स हो गए, फिर उसके बाद डायग्नोसिस या इन्वेस्टिगेशन, फिर मैनेजमेंट, तो ये पैरेलल नहीं है। तो ये जो है एग्जांपल है इसका जो जिसमें ये इनका हेट्रोजेनिसिटी जो है पाई गई है, सही। तो इसका जो इलॉजिकल ऑर्डर है, इनका लॉजिकल नहीं बनता कि ये जो है दो, ये सिम्टम्स हो गए, ये डायग्नोसिस दो हो गई, ये जो मैनेजमेंट हो गई। फिर नेक्स्ट जो है दैट इज, इसको हम बाज औकात कहते हैं ना कि नन ऑफ द अबव ऑल ऑफ द, ये भी बहुत कॉमनली एज ए टीचर्स जो है हम ये गलती कर लेते हैं। ओके, अच्छा, सो यहाँ पे एक एमसीक्यू है, चिकन पॉक्स इज caused बाय द सेम वायरस दैट causes herpes simplex labialis, herpes zoster, and then herpetic stomatitis, and then all of the above, none of the above। अब इनमें से या तो नन ऑफ द अबव या ऑल ऑफ द अबव इनमें से एक जो है ये गलत, बल्कि इस तरह की बिल्कुल हमारे ऑप्शन में नहीं होनी चाहिए।
all of the above या none of the above, both A and B, A, B and C, all of the above except C। इस तरह की जो ऑप्शन जो है नहीं, बल्कि हर एक जो है एक मीनिंगफुल ऑप्शन होनी चाहिए। उसकी लेंथ सिमिलर होनी चाहिए। दे शुड बी पैरेलल, होमोजेनिटी उसमें होनी चाहिए, होमोजेनियस होनी चाहिए, हेट्रोजेनियस हेट्रोजेनिटी या डिफरेंट कैटेगरीज की नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह की भी जो है ये ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव वाला फ्रेज जो है वी शुड डिवाइड इन आवर एमसीक्यू। इसमें भी न्यूमेरिक डेटा दैट नॉट स्टेटेड कंसिस्टेंटली, जी भी अक्सर इस तरह होता है कि जब हम ऑप्शन पूछिए तो उसका जो ऑप्शन होते हैं या तो इल्लॉजिकल ऑर्डर के साथ होते हैं, या उनका जो फॉर्मेट होता है ये इनकंसिस्टेंट होता है। When numeric options they are used, they should be listed in a numeric order or a single format. Like in this example, a 24-year-old woman delivered a boy with Down syndrome. Um, Down syndrome, she is depressed and asks you, what is the likelihood of her having another child with a similar condition? Your answer will be, यानी वो पॉसिबिलिटी के बारे में पूछ रही है दूसरी चाइल्ड की, अगर पहला बच्चा जो है डाउन सिंड्रोम के साथ है। आप उसको ऑप्शन दे देते हैं 2%, 5%, 25%, लेस देन 10% एंड 15 to 18%। अब यहाँ से अगर आप देखिए ऑप्शन डी जो है लेस देन 10% एंड 2 and 5%, ये तीनों एक करेक्ट आ रहा है। इफ इट इज द करेक्ट ऑप्शन इज लेस देन 10%, तो ये वो उसमें हम टेस्ट वाइज कैटेगरी में भी डाल सकते हैं कि जो इनकन्सिस्टेंसी है, क्योंकि स्टूडेंट्स को पता हो कि भाई दो एक ऑप्शन को तो ही होना है, दो तो ऑप्शन दो तो ठीक नहीं हो सकते ना, या तीन। अगर लेस देन 10% है तो फिर तो 2% भी लेस देन 10 है, 5% भी लेस देन 10 है, तो ये तीनों की तीनों निकल गए। अब यहाँ पे अगर आप देखिए ये तो एक फ्लैग ये भी है कि इसमें से जो है टेस्ट वाइजनेस के रिलेटेड। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखिए जो लॉजिकल और उसकी फॉर्मेट की बात है, ये तो बिल्कुल सही है, तरतीब की है उसमें 2, 5, 25। लेकिन फिर यहाँ पे एक उन्होंने एक मार्जिन दिया है कि इससे कम होगा, और यहाँ पे उन्होंने रेंज दिया है। तो ऑल ऑफ देम दे शुड बी numerical order ascending or descending, and the format should be single, not like यहाँ पे देखिए less than लिखे हैं, so all of the above should be then containing less than or more than। या अगर यहाँ पे रेंज है तो तमाम के तमाम रेंज होनी चाहिए। या यहाँ पर हमने सिंगल डिजिट परसेंट दिया है, 2%, 5%, 25%, 30%, 35%। इस तरह की जो है हमने उनकी फॉर्मेट जो है ये सिमिलर रखनी है। अब यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे और उसमें से फिर जो है फिर उसमें देखेंगे कि क्या क्या उसमें आ रही है, यानी एक एमसीक्यूज होगा और उसमें फिर हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी आ रही है। दिस इज द रिपीटेशन ऑफ व्हाट वी हैव डिस्कस previously in this slides. So DOTS is the most effective treatment in HIV, AIDS, leishmaniasis, malaria, and what is the pronunciation of this word? Schistosomiasis and then tuberculosis। अब ये जो कंडीशंस है इसमें से इफेक्टिव ट्रीटमेंट ये डॉट्स जो है ये इसके थ्रू व्हाट इज द flaw in this MCQ? So this is a single correct MCQ rather than single best answer because options are either 100% true or 100% false. The item tests recall of knowledge rather than application of knowledge. This problem could be avoided by using clinical affinities or patient scenarios. जस्ट लाइक प्रीवियस हमने एग्जांपल दिया था कि वहां पर कंटेक्स्ट फ्री की बजाय द सिनेरियो देयर शुड बी कंटेक्स्ट स्विच। हमने विनिटी बनानी है और विनिटी के बाद हमने एक प्लेस के सिनेरियो बयान करनी है। उसके एंड में फिर हमने लिखना है कि व्हाट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट स्टेप या ट्रीटमेंट फॉर सच पेशेंट। तो फिर जो है ये हमारी सही हो जाएगा। अच्छा, तो नोट दैट द एब्रिविएशन डॉट्स हैज नॉट बीन स्पेल्ड आउट। तो ये भी अक्सर हम एमसीक्यूज में ये कर लेते हैं। बाज ऐसी एब्रिविएशन होते हैं जो यूनिवर्सल होता है, जैसे यूएसए, यूएई, यूके। तो ये इसको तो फिर भी जो है, लेकिन बाज स्पेसिफिकली मेडिसिन रिलेटेड जितने भी एब्रिविएशन एंड एक्रोनिम्स हैं दे शुड बी रिटन एंड फुल फॉर्म, even if they are in the option or even if they are in the
आइटम। तो ये जो है हमने यहाँ पे, और ये बहुत कॉमनली मिस्टेक जो अक्सर हम, हमारी ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, दैट ट्रीटमेंट। सपोज डॉक्टर जो है वो अ, लिख देता है डायग्नोसिस डीएक्स, तो उसको पता है कि भाई डीएक्स इज द डायग्नोसिस, बट दिस इज नॉट। स्टूडेंट्स के लिए शायद उसके नो कि भाई डी से मुराद क्या, सो यू शुड राइट द फुल फॉर्म ऑफ दिस वर्ड्स। It's another MCQ. A 2-year-old girl brought to the A because of several thin-walled 1 to 2 cm blisters on her face and several crusted honey-colored and weeping lesions on her arms. Patient is febrile and has no issues related to lymphadenopathy. Which of the following statement concerning the most likely etiology for these findings correct? So these are the options, और इसमें कॉमन जिसमें फ्लॉ कौन सी है? Options are not consistent with the lead-in statement. None of the options mention the most likely etiology in this case. The options are not homogeneous. One of them is about the etiology, the second is about complication, and the other about management, जो हमने previously एक example discuss किया. This is a true false rather than single best answer question. And another यहाँ पे देखिए हम all of the above and true. Okay. तो दिस इज एक्चुअली इस तरह, ये भी हमने अभी रिसेंट डिस्कस किया। तो इस तरह के एमसीक्यू में अगर हम जहाँ पे ये ए एंड बी ऑल ऑफ देबो या ऑल नन ऑफ देबो जी, ये नहीं होनी चाहिए। तो इस MCQ 3 में जो है ऑल ऑफ देबो ट्रू एंड बी, दिस इज द फ्लॉ व्हिच इज प्रेजेंट इन दिस MCQ. So there the paragraph the patient subsequently indicate that the question is continuation of a previous question that was not shown here. ऑप्शन सी इज मच लॉन्गर एंड मोर डिटेल देन द अदर ऑप्शन। तो वो जो लेंथ वाइज वाली बात है वो भी इसमें आ जाती है कि आप इन दोनों के बजाय इनको देखें, दिस इज दैट इज इन मच डिटेल, which again will just tell the student that the option C is the correct option, and options are not homogeneous. So the next MCQ, which of the following is the clinical hallmark of asthma? Cough, nocturnal dyspnea, shortness of breath, wheezing, AC, and D. The item test recall of knowledge stimulus free as there is no patient scenario for the application of knowledge. तो यहाँ पर भी जो है एक एजमा की एक सिनेरियो यहाँ पे अगर हम डाल लेते तो ये context rich हो जाता। Option E is a combination of multiple options. If the student knows two are correct, the inevitable choice would be E. अगर यहाँ पर अगर उनको कहें कि भाई suppose A and C and D have cough, dyspnea एंड वीजिंग, अब उसको पता है कि भाई एजमा में कफ और वीजिंग कॉमन नहीं होती हैं, बट ही इज अनश्योर अबाउट द सी विच इज द शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। तो ए सी एंड डी दे आर द करेक्ट, तो उसको इसकी श्योरिटी नहीं है, फिर भी जो है इसी ई ऑप्शन की वजह से वो इसको टेक है, बिकॉज उसको पता है कि कफ एंड वीजिंग दे आर कॉमन इन एजमा, बट आई डोंट नो अबाउट द शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, तो ये इनको टेक करेगा। तो इस तरह की भी जो है गलती नहीं होनी चाहिए। The stem that contains single and plural form is difficult to read. या तो हमने यहाँ पे again which of the following is R, तो ये भी जो है it should be make it very clear that it is or R, और नीचे हमारे ऑप्शन भी उसी तरह फिर होनी चाहिए। अगर हम ये वाला ऑप्शन निकाल दें A C and D, तो फिर जो है ये R खुद बहुत खत्म हो जाएगा, because one of the options will be the correct option there. Here it is the next MCQ, और इस MCQ में अगेन उसमें आ रही है कि ऑप्शन ए एंड बी एंड सी, वो प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पे तो एक मिनट मौजूद है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बी इज टू लॉन्ग एज कम्पेयर टू द ए एंड सी, एंड ए एंड बी एंड सी, ये जो है ये भी गलती यहाँ पे मौजूद है, तो ये नहीं होनी चाहिए। The correct answer B is longer, more complete, and more specific than the others. A and B and C are used in the option. This is one of the first. ये दो गलतियां जो है इस MCQ में मौजूद।
अब ये गलतियां जो हैं इसको अवॉइड करने के लिए हम कुछ कुछ गाइडलाइंस यहाँ पे रिवाइज करते हैं कि जो which it will be helpful while the construction of MCQ. Include as much include as much of the item as possible in the stem, long stem, short option. Avoid negatively priced item except or not in the lead in. If you must use only with short option and they should be underlined, the except or not, they should be underlined or bold. While writing question of the form, which of the following statement is correct? Each of the following statement is correct except इस तरह की जो क्वेश्चन आइटम जो है ये भी हमें नहीं करनी चाहिए बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखें रूल 1 जो हमारा था कि अगर हम ऑप्शन को कवर कर ले कवर ऑफ द ऑप्शन रूल जो था जो हमने प्रीवियस सेशन में सेकंड सेशन में हमने डिस्कस किया था तो उसमें भी ये होगा कि ऑप्शन जो है उसको अगर आप कवर कर ले फिर भी जो इसका आंसर पॉसिबल होगा लेकिन अगर हम इस तरह की स्टेटमेंट दें कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट तो ऑब्वियसली उसके लिए हमने ऑप्शंस को जो है रीड करना होगा तब जाके हम वी विल डिसाइड इसलिए इस तरह की स्टेटमेंट जो है दैट शुड बी अवॉइडेड द ऑप्शन शुड बी रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर शॉर्ट ऑप्शन टू द लॉन्ग वन top down versus bottom up knowledge or recall question cite a disease and then ask what patient finding are expected structure like textbook clinically backward bottom up जो है application of knowledge use funding and ask examiners to indicate the disease examiners need to be able to synthesize information from several pages of a textbook or answer to these and these are clinically realistic we have a summary so this is an assignment for all of you select a topic from one of your subjects and construct MCQ of 5 choice alternatives try to write MCQ without flaws यहाँ पे यानी आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इसमें फ्लॉज जो है ये ना हो इसके बाद जो है सेकंड इज राइट टू एमसीक्यूज विद द फ्लॉज एंड आइडेंटिफाई द फ्लॉज इन इट दैट वाज ऑल अबाउट द कॉमन flaws mistakes technical flaws we often as a teacher have while constructing the MCQs. Thank you so much to all of you.